Good morning, students. Today we are going to understand sum number 7 to sum number 12 from exercise 1.3 in probability. Then sum number 7, two aircrafts drop bomb to destroy a bridge. The probability that a bomb dropped from the first aircraft hits the target is 0.9 and the probability that a bomb from the second aircraft hits the target is 0.7. The probability of one bomb dropped from both the aircrafts hitting the target is 0.63. The bridge is destroyed even if one bomb drops on it. Find the probability that the bridge is destroyed. Then students, event A equals to a bomb dropped from the first aircraft hits the target. Probability of event A PA equals to 0.9 given. Then event B, a bomb dropped from the second aircraft hits the target. Probability of event B PB equals to 0.7. Then event A intersection B equals to a bomb dropped from the both aircrafts hitting the target. Probability of event A intersection B PA intersection B equals to 0.63. Then जो इवेंट हमें फाइंड करनी है उसके लिए इवेंट A यूनियन B, the bridge is destroyed. देन स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया गया है कि एक बॉम्ब भी अगर गिरता है तो ब्रिज डिस्ट्रॉय होता है. मींस कोई भी एक बॉम्ब गिरे और ब्रिज डिस्ट्रॉयड हो जाए उसके लिए हमें फाइंड करना है इवेंट ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी पी ए यूनियन बी. फॉर्मूला फॉर पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. Then PA equals to 0.9, PB equals to 0.7 minus 0.63. 0.9 plus 0.7 करेंगे 1.6 मिलेगा. 1.6 में से 0.63 माइनस करेंगे आंसर विल बी 0.97. सो PA union B equals to 0.97. दिस इज अवर आंसर. स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 7. अब करेंगे नेक्स्ट सम नंबर 8. द प्रोबेबिलिटी दैट अ टीनेजर कमिंग टू अ रेस्टोरेंट फॉर डिनर orders pizza is 0.63. The probability of ordering cold drink is 0.54.
the probability that the teenager orders at least one out of pizza and cold drink is 0.88. Then students, it is given P A union B. Find the probability that the teenager coming for dinner on a certain day orders only one of the two items from pizza and cold drink. Then students, event A equals to a teenager orders pizza, then probability of event A PA equals to 0.63. Event B equals to a teenager orders cold drink, then probability of event B PB equals to 0.54. Then here event A union B is given. A teenager orders at least one out of pizza and cold drink, then probability of event A union B P A union B 0.88. देन स्टूडेंट्स हमें सम में ज़रूरत पड़ेगी इंटरसेक्शन बी फाइंड करने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो वी हैव फाइंड आउट event A intersection B. Then what is the mean by A intersection B? Then a teenager orders both pizza and cold drink. Then probability of event A intersection B फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, P A intersection B. Here I will not say that the formula for P A intersection B equals to that. I will write here P A union B equals to P A plus P B minus P A intersection B. Then we have P A union B. Then in place of P A union B we will write 0.88, and in place of P A we will write 0.63, and in place of PB we will write 0.54, and we have to find out PA intersection B. Then PA intersection B को इक्वल्स टू के इस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा PA intersection B इक्वल्स टू 0.63 प्लस 0.54 करेंगे तो 1.17, माइनस करेंगे 0.88 को इक्वल्स टू के इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 0.88 माइनस करें तो 0.29 वैल्यू आएगी. PA इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 0.29. Students, here we will denote event C. The teenager coming for dinner on a certain day orders only one of the two items from pizza and cold drink. Then a teenager orders only one of the two items from pizza
and cool drink. Then we have to find out probability of event C, PC. So PC equals to PA intersection B dash plus PA dash intersection B. Then students means जो टीनेजर है वो पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे लेकिन कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर ना दे, पिज़्ज़ा का ऑर्डर ना दे लेकिन कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दे, मीन्स ये दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हो सकती है यहाँ पर, इसलिए इसे फाइंड करेंगे। फॉर्मूला में ये इसका फॉर्मूला अलग होगा, इसका फॉर्मूला अलग होगा। देन फॉर दिस formula is PA minus PA intersection B plus for this PB minus PA intersection B. Then PA equals to here is 0.63 minus PA intersection B is 0.29. Then PB equals to 0.54 minus 0.29. Then 0.63 minus 0.29 value will be 0.34 plus 0.54 minus 0.29 0.25. Then our answer will be 0.59. PC equals to 0.59. This is our final answer. Then students इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 8। अब करेंगे नेक्स्ट सम। सम नंबर 9, if A and B are mutually exclusive and exhaustive events in a sample space U and PA equals to 2BB, then find PA. Then students here event A and event B are mutually exclusive and exhaustive events. So P A यूनियन B इक्वल्स टू 1 होगा स्टूडेंट्स, एंड P A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 5 मिलेगी, मीन्स 0। देन सपोज करेंगे स्टूडेंट्स, सपोज P A इक्वल्स टू 2PB इक्वल्स टू K, दैट मीन्स P A इक्वल्स टू K, 2PB equals to K. So PA's value we gets equals to K, 2 equals to K इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा K upon 2. Then we know that if event A and B are mutually exclusive and exhaustive events, so PA union B equals to 1 and PA union B means PA plus PB only, because P intersection B की वैल्यू तो 0 मिलेगी. Then in place of PA we will put K and in place of PB we will put K upon 2 equals to 1. Then LCM लेंगे 2 1 2K plus K. Then cross multiplication 3K equals to 2, 3 equals to K इस तरफ आएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा 3, K की वैल्यू 2 upon 3. We have to find out PA's value. PA equals to K and
The value of K is 2/3 means PA equals to 2/3. It is our final answer. Then students इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 9. अब करेंगे नेक्स्ट सम. Sum number 10. Three events A, B and C in a sample space are mutually exclusive and exhaustive. If 4PA equals to 5PB equals to 3PC, then find PA union C and PB union C. Then here events A, B and C are mutually exclusive and exhaustive events. So P A union B union C equals to 1 and P A intersection B equals to 5 means 0. P B intersection C equals to 5. P C intersection A equals to 5. Then P A intersection B intersection C equals to 5. Then suppose करेंगे स्टूडेंट्स. सपोज 4PA equals to 5PB equals to 3PC equals to K. It means 4PA equals to K, 5PB equals to K and 3PC equals to K. Equals to K इस तरफ आएगा 4, then K upon 4. 5 equals to K इस तरफ आएगा तो K upon 5. 3 equals to K इस तरफ आएगा K upon 3. Then P A union B union C equals to 1 and formula for PA union B union C equals to PA plus PB plus PC equals to 1. Then in place of PA K upon 4, in place of PB K upon 5, in place of PC K upon 3 equals to 1. LCM लेंगे स्टूडेंट्स. 60 इक्वल्स टू 1. 60 को 4 से डिवाइड करें 15. 15 के 60 को 5 से डिवाइड करें 12. 12 को मल्टीप्लाई करें के से 12 के. 60 को 3 से डिवाइड करें 20 के से मल्टीप्लाई करेंगे 20 के. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड एडिशन कर लेंगे 15 के प्लस 12 के प्लस 20 के. 15 plus 12 plus 20 it comes 47k. 47k equals to 60. 47 equals to k इस तरफ आएगा then 60 upon 47. So we can find out PA's value. So PA equals to k upon 4. Then in place of k we will write down 60 upon 47 multiply by 4. Then 60 को 4 से डिवाइड कर देंगे then 15 upon 47. PB फाइंड करें. PB equals to k upon 5. In place of k 60 upon 47 multiply by 5 डिवाइड करेंगे 60 को 5 से 12 upon 47. PB PC फाइंड करें. PC equals to k upon 3. In place of k
we will write down 60 upon 47 multiply by 3. 60 को 3 से डिवाइड करें 20 upon 47. Then PC, we have to find out PA union C and PB union C. So PA union C equals to PA plus PC. PA's value is 15 upon 47 and PC's value is 20 upon 47. डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर्स में प्लस कर लेंगे 35 upon 47. So this is our answer for PA union C. Then PB union C फाइंड करना है हमें. PB union C equals to PB plus PC. PB is 12 upon 47 and PC is 20 upon 47. Then डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर्स में प्लस हो जाएगा 32 upon 47. Our answer for PB union C equals to 32 upon 47. Then students कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 10. अब करेंगे नेक्स्ट सम नंबर 11. फाइंड PA union B union C using the following information about 3 events A, B and C in a sample space. Then students यहाँ पर हमें अप्लाई करना है फॉर्मूला. ऑल वैल्यूज आर गिवन. PA union B union C equals to PA plus PB plus PC minus PA intersection B minus PB intersection C minus PA intersection C plus PA intersection B intersection C. Then values put करेंगे स्टूडेंट्स. PA's value is 0.65, PB's value 0.45, PC's value 0.25, P intersection B's value 0.25, PB intersection C's value 0.2 minus P intersection C's value 0.15 and plus P intersection B intersection 0.5. प्लस माइनस कर लेंगे स्टूडेंट्स. .05. देन प्लस माइनस कर लेंगे स्टूडेंट्स. 0.65 प्लस 0.45 प्लस 0.25 माइनस 0.25 माइनस 0.2 माइनस 0.15 plus 0.05 equals to 0.8. Then students our answer for PA union B union C is 0.8. इसी के साथ कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स हमारा सम नंबर 11. अब करेंगे नेक्स्ट सम. 12th. 3 events A, B and C in a sample space are mutually exclusive and exhaustive. If PC dash equals to 0.8 and 3 PB equals to 2 PA dash, then find PA and PB. Then students here events A, B and C are mutually exclusive and exhaustive. Events. It means PA union B union C equals to 1 and PA intersection B equals to 5, PB intersection C equals to 5, PA intersection C equals to 5 and PA intersection B intersection C equals to 5. Then here PC dash is given. So first of all we can find out from PC dash PC. Then formula for PC is 1 minus PC dash.
So 1 minus 0.8, it comes 0.2. PC equals to 0.2. Then suppose 3PB equals to 2PA dash equals to K. Then 3PB equals to K, 2PA dash equals to K. Then PB equals to K upon 3, PA dash equals to K upon 2. स्टूडेंट्स हमें PA की ज़रूरत है यहाँ पर. Then we can obtain PA from PA dash 1 minus PA dash 1 minus K upon 2. Then LCM 2 minus K, so it is PA. Then PA union B union C equals to 1. PA union B union C means PA plus PB plus PC equals to 1. In place of PA we will put 2 minus K upon 2 plus in place of PB K upon 3 and in place of PC 0.2 equals to 1. 0.2 equals 2 के इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 minus 0.2. Then LCM लेंगे 6 and here 0.8. 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 मिलेगा. 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 3K प्लस 6 को 3 से डिवाइड करें 2 मिलेगा. 2 को K से मल्टीप्लाई करें 2K. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और K की वैल्यूज़ के बीच में प्लस माइनस कर लेंगे. Then here 6 minus K equals to 4.8. Then 6 equals to K इस तरफ जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा -6. Then minus K equals to -1.2. माइनस से माइनस कट हो जाएगा. K's value is 1.2. We have to find out here the value of PA and value of PB. Then PA equals to here is 2 minus K upon 2. Then in place of K we can put 1.2 upon 2 means 2 minus 1.2 0.8 divided by 2, then 0.4. This is our answer for PA. You can write like that also. PA equals to 4 upon 10 and commonly 2 से डिवाइड हो जाएगा. Then you can write also PA equals to 2 upon 5. This is our answer and this is our answer. Then we have to find out PB. PB is K upon 3. In place of K we will put 1.2 divided by 3 means 0.4. PB. This is our answer, or PB equals to 4 upon 10 and PB equals to 2 upon 5. This is our answer or this is our answer. स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 12. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ. स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस. थैंक यू स्टूडेंट्स.